नमस्कार। आज लाइट अच्छा है। आज जिस होटल के कमरे में मैं रुका हूँ, यहाँ से मुझे लाइट अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि पिछले जितनी बार भी हम मिले हैं, उसके उस होटल में लाइट कम रहती थी, तो इतना मज़ा जो है ना वो आता नहीं था। इसलिए मैंने आज लाइट देखने के बाद सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारे लिए है, जो हमने चूज़ किया, जो आप लोगों से बात करने की सोचा, तो उसमें है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जो जॉब आप करते हैं, तो जॉब में हर दिन मतलब कुछ न कुछ ऐसा मगजमारी होता है कि आपका मन करेगा कि यार छोड़ो छाड़ दो ये सब, और चलो कुछ अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ अपना हम सोचते हैं। अब ये बातें मतलब हम कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम कोई और चीज़ सोचें, तो उससे जल्दी हमारा डर काम करता है। तो डर को कम करने के लिए हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए, इस पे मैं बात करने की बात सोच रहा हूँ। हुँ। तो मोर और लेस हम इस पे बात करते रहेंगे। बीच-बीच में मैसेज आता है, कोई हमें है जो लाइव को लाइक कर रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव को लाइक करने के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग बिज़नेस मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने में सबसे जो पहला चीज़ चेक करने के लिए होता है कि आरओआई कितना साल में आता है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड ये है कि 3 साल से पहले आता है, तो क्योंकि 3 साल रखने का ये होता है मकसद कि 3 साल से ज़्यादा जो है ना वो किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से आ सकता है। तो इसलिए 3 साल से ज़्यादा जिसकी आरओआई होती है, उसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन कोई-कोई चीज़ क्रिटिकल होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जनरली कोशिश ये होती है कि 3 साल में जिसकी आरओआई आ जाए, उसको हम उस बिज़नेस को हम स्टार्ट करें। तो इसमें देवराज वेलकम, वेलकम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। So the first thing is ROI. So ROI, how you take out for the simple calculation. However, we are making full Excel sheet and then we are reverting on this. So it's net profit divided by cost of investment. So that's your ROI. In percent, if you want, make multiply it with 100. So net profit by cost of investment into 100. Sometime, if you are buying the or acquiring some other business, so in that business you don't have to buy the machinery. अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। स्वागत है आपका। और both of you are advised, if you have some idea, please keep commenting so that I can know. So the one method is that net profit by cost of investment, and the second method is present value minus cost of investment. But when you are acquiring some other business, so in that you will ask them that please give us the investment, the time of investment, what you when you started this business, then what was your investment. So present value minus COI, and that is cost of investment, divided by from the same value into 100. सपोज 100 रुपीज आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, but now it's 200 and you are acquiring that business. So 200 minus 100 by 100. That's the ROI, and then into 100 if you want in percent. Otherwise, ROI is number. Then the second thing to check, that what the second thing, once you buy the business, you have to advertise it. That's the major expenses nowadays because of competition growing. So this is the major expense that you have to approach through the advertising company to the actual user or the consumer, that how you say that, how it reach this message to reach to him. So the cost of advertising, uh, it is called ROS. ROS means cost on advertising is spend. So it is required like revenue from ad and cost of ads. So revenue means when you given this cost for this period, so how much you earn. But here, if you are getting more than 50%, it is okay because it is intangible asset. Once your product is well known in the market, then it is automatically approaching to the user. But even then, like the Britannia company, like the Birla company, they have the product Adani.
they have the product knowing to everyone, but even then they are advertising. Just that remind to the consumer. Then there is working capital. So working capital means current assets minus current liability. Current asset means current liability. Net working capital ratio. So here, current asset, net working capital means the current asset that much you have and minus current liability. So liability is your fixed expenses. What is the fixed expenses? That's so this net working capital means you can use at the supplier end or at the customer end. So both this you have to understood that how much the supplier will give us. Suppose we are getting like 100,000, we have the business revenue. So 100,000 in business we are receiving from, we are living from, or we are calculating from like 60,000 from the supplier end. Like we are buying the material and we are not paying them. We are saying please give us for 30 days credit. Sometime we are saying please give us 60 days credit. Sometime 90 days also. On the other hand, there is like your customer, the consumer or the distributor or the hypermarket or the supermarket, they are also not paying you. Okay, so this cycle need to understand, and that is called networking asset. That how much money you are getting from your supplier, and that you material, how much value of material you are getting, and how much you are leaving to the customer side. So that's the networking asset and the working capital ratio. Ratio means current asset and current liability. So asset by liability is always called working capital ratio. So that's difficult, always difficult to count and understand, because intangible asset as well as some of the assets that in use but not on the counting. Then there is profit margin, that how much margin you are expecting to earn. Because usually when we are calculating, we are missing many of the expenses, and we think that with this business if we start, we will get that much profit, and we will our investment will be equal in 2 years or 3 years. But actually it's not the scene, because we are missing so many expenses, and we are losing so many things to grow, to count and to calculate in between. And at the end it's happened like we thought like it will be recovered in 2 years, but it in spite of 2 years it's getting 5 years. So net profit margin to be calculated like net profit by net revenue. So revenue sometimes generated, but profit not comes. So that we have to take care. Then gross profit margin, revenue minus COGS by revenue. So gross profit margin means in the country where there is taxation, so we have to reduce the tax. But it's not so necessary to calculate before you start the business, because in the initial period, it is important to continue with whatever the revenues are coming, even if it is not coming as a profit margin, that's okay. But revenues are generating, it's always beneficial, it's always good to continue. Then there is earning before interest, tax declaration, and amortization, EBITDA. So EBITDA is something that when you are acquiring a business, that's very very important. Like you are acquiring some business that is running very good, but they have some different kind of different direction business. So the employees are not able to focus on same direction. In that case, company offer acquisition. So in that company you need to study their EBITDA. But if the company is not working, if the company is going down, if it's stepping out, then many things consider other than this one. EBITDA, however, you can check that one earning before, but you already knowing that this company is going in loss, that's why they wanted to sell. Or you already knowing that this company is not working good, even they are not earning profit, even then they are working well. Because I know many company in the UAE. Devraj, are you there? If there, comment this, because I picked up this topic which I like, but I don't know whether you people like it or not. Hmm. So, so this topic. Hmm.
So when you are acquiring the upcoming business, yes, sir. Thank you very much. Thank you very much for connecting and continuing this. So the EBITDA is good when the business is growing, and that time because of different perspective, because of the not in the same group of business they are doing. That's why same direction. They are not doing. They have many dimensions. That's why they want to separate some of the dimension. That is why they wanted to remove it. Then break even point. So break even point means fixed cost by selling price per unit, variable cost per unit. So whatever the selling cost or whatever the variable cost, that you have to consider it here. Break even point means whatever you made the investment, that you recovered, but you are not earning the profit. But this one is also very good, that you have break even. Now the profit is no profit, no loss. But in the previous video, one of the video, I have said that you are selling time, you are selling your skill, and people understand this is business. This is not the business, this is you are selling your skill. So when you are selling your skill in the same business, that time you have to consider that break even point you are calculating is the part of your salary. Your sorry is the part no Your salary is the part of that. If your salary you are not earning, you are not you thinking that whatever the profit, that's my earning. In that case, this break even point is not enough. But break even point is enough if your salary is a part of that calculation. So you are earning money, your salary you are receiving, and then the business is not doing profit. So that period we need to understand that after how many period we can achieve to that point, and that point will be crucial to sustain into the business, because many business run just on break even point just to continue the business. So in that business their employment is included, because they say that I am not earning, but a lump sum salary is the part of their expense. So in that case, they keep continue. Okay, then revenue run rate, that is called triple R. So revenue run rate is revenue for a period like 1 year, number of period in a year. So revenue of period means how many times you are calculating your revenue. That means simply the per month income. So per month, sorry, revenue और income में थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड दिस इज व्हाट, ये कि रेवेन्यू में जैसे ये है कि 100 आइटम बिका है, तो 100 आइटम में कितना कैश आया है. सो उस कैश में, उस बिजनेस में योर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. बट दैट डजेंट मीन दैट इट इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अभी समझे कि 100 रुपीज का आपने 100 आइटम बेचा है या 200 आइटम बेचा है, और इन ईच आइटम यू आर गेटिंग 5 रुपीज. So your income is only 100 into 5, so it's 500. But revenue is 100 into 200, so 20,000. So this you need to understand that cash flow is different thing, and the earning profit is totally one of the part of that revenue. So don't mix with income to the revenue. So revenue to triple R. ट्रिपल आर इज रेवेन्यू रन रेट, कि ये जो रेवेन्यू आ रहा है मीन्स आपका जो कैश फ्लो है वो कितने महीने में सर्कुलेट होता है. यानी आप अगर अपनी पैसा मार्केट से मतलब इन्वेस्ट करते हैं, सो इन्वेस्ट टाइम यू आर बाइंग द रॉ मटेरियल, यू आर मेकिंग और यू आर पैकिंग और यू आर कीपिंग वेयर हाउस, it is going into the market. So till the time your money is hold, and market and the customer is paying you back the value of that cost. So in all that it is coming. Mm, so it's not to be the part of this. So triple R means once you investing that money, that cash when it coming back. So it is more related to the cash back or cash flow management. So this is revenue, is the revenue run rate. So there are 7 point I am writing here. You people, you can check it before what we say. You can write also, or you can check it also when our live finish, so that it will be in the live. But I am writing here one by one. So the first one is ROI. Second one,
Second one is ROAS, ROAS. That means return on advertising spend. So advertising spend, whatever you do, how much you are receiving it back, means how much revenue this advertise generated. However, this calculation is little crucial. That how you calculate this. That's because of this advertise you receive this business, but probably you can interrelate to each other. Then there is networking capital. Networking capital or working capital. In the working capital, so networking capital or working capital. Working capital is more important because current asset by current liability, current asset by current. Okay. Working capital ratio. Networking capital means working capital ratio. After that, working capital ratio. So one is working capital. Networking capital means current asset my current liability, and working capital ratio means current asset divided by current liability. So these two formula to be taken care. Then profit margin. In profit margin there are 2 point. Profit margin there are 2 point. One is net profit margin. Net profit margin, which is the part of profit margin. Net profit margin. Second one is gross profit margin. So net profit margin and gross profit margin. Yeah, at this point you have to learn the technique gross profit margin, not gross margin. So here in this point you have to learn that how you can save taxes. What are the points that government offering you to save the cost? Then EBITDA. EBITDA I am writing. So its full form is earning before interest, tax, then depreciation and amortization. So this is very difficult term, but all the expenses to remove. This is what in simple words. Then break even point. Yeah, this I always calculate for any business. Break even points. So BEP. ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द बिजनेस. अनिल जी आप हैं, अगर हैं तो ये बताएं कि आपको कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का. तो ये ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स फिक्स कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, revenue run rate. Then triple R is revenue run rate. Revenue run rate means what is the cycle of your revenue. Like once you invest the money, that money when it's come back to you. So that's the revenue rate cycle. Like revenue per period for a period in a year. So that's the thing that we need to calculate. Now any question, any one of you. तीसरा दो आदमी हमें दिख रहे हैं, अभी अनिल जी चले गए कि नहीं हैं पता नहीं. जो दूसरे लोग हमें दिख रहे हैं उसमें है उसमें है हाँ, दो आदमी हमें दिख रहे हैं, तीसरा आदमी कौन है नहीं पता. कोई मेरे घर से होंगे तो हो सकता है, क्योंकि जो ये टाइम है स्टार्ट करने का ये थोड़ा सा ये है. सो एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज शेयर सो दैट वी कैन डिस्कस लिटिल बिट. So next time I am going to ask for the business idea that what we can start uh, on the lower scale, low cost, what we can start. Devraj, EBITDA, earning before income tax, depreciation and amortization. The first thing is earning that you receive, you sell any product and then you collect the cost. That is EBITDA. So this is earning before. So on that, the tax is included, depreciation is included, amortization is included, because you get the price of the product. So company receiving that, and then they are calculating that how much I have to our income, how much is the profit, how much is the tax, and how much is the depreciation of the machinery used during this period, and amortization means how much we can use if we sell that sources. So this is every time means the pure income. Uh, Pure income means sorry, not pure income. The cost
that you receive, the price you receive after selling a product. So that value is called EBITDA. Hmm. For this, I will make also on video on this, that how it is calculated. But it is calculated when you start the business. Before starting the business, you cannot. But before starting, if you are thinking about it, that means you take the reference of similar kind of business, that how much they are earning. Like I am saying that milk business is 6 to 8%, edible oil business is on 3%. So this is the average of three, four, five company in the market, and what is their projection on that. So that's this expectation. And after starting the business, we need to understand that how much it is going on, how much they are earning, how much they are collecting the money from the market. So that will also come into that. So that we will discuss. और कोई भी क्वेश्चन हो तो इस पे ज़रूर, क्योंकि पीपल लोग करते क्या हैं कि खास करके जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो थोड़े से अर्निंग करते हैं लेकिन नौकरी से उनको मज़ा नहीं आता है, तो वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने में वो ये सब चीज़ें कंसीडर नहीं करते और फिर फंस जाते हैं। फँस जाने का मतलब ये है कि उनको नहीं पता है कि ये पैसा कैसे रिटर्न आएगा, और फिर उसके बाद कई सारे चीज़ें होते हैं। तो हम इसलिए ये बनाते हैं कि ये थोड़ा-सा लोग स्टडी करें, इन चीज़ों के बारे में सोचें। इन चीज़ों के बारे में सोचने से आपको ये तो हो ही जाएगा कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, मतलब कितना पैसा आप लगा रहे हैं, ये समझ में आएगा। क्योंकि अभी हो ये रहा है, जो मैक्सिमम बिज़नेस है, जब उसको आप एस्टेब्लिश करते हैं, तो इनिशियली आप सोचते हैं कि यार ये 100,000 में हो जाएगा, $100,000 मतलब 1,00,000। अब इंडियन रुपी सोचें तो आप ऐसे कि 10 लाख रुपए में हो जाएगा, और पता चलता है कि प्रोजेक्ट खत्म होते-होते वो 20 या 25 लाख पे पहुँच गया है। तो उसका ये प्रॉब्लम ये है कि हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते, और हम ऐसे बीच में आ जाते हैं। बट उसका दूसरा बैड इफ़ेक्ट ये है कि अगर हम इतना सारा सोच लेते हैं, तो हमारे पास उतना पैसा होने का हम इंतज़ार करते हैं, तो वो हम बिज़नेस ही स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो उसमें ये बातें नहीं कहता हूँ। कि सर इसके बीच में ये खर्चा आने वाला है और ये होने वाला है, और ये निकल जाने वाला है, ऐसा नहीं कहता। तो ये चीज़ें आपको दोनों में देखना है कि व्हिच वन इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल, कि अगर हम बिज़नेस चेंज करते हैं इन दैट केस, और ये हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इतना इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन जो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, यानी 10 लाख में आपने काम सोच के शुरू किया कि 10 लाख खर्चा में हो जाएगा, 10 लाख में बिज़नेस शुरू हो जाएगा, और आपका पैसा, मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है जो पैसा को होल्ड करता है, यानी वो जब बिकेगा तो पैसा आएगा, और वो बिकने में आपको टाइम लग रहा है, तो फिर आप दूसरा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तीसरा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और बिज़नेस को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इन दैट कंटिन्यूएशन वो इम्पोर्टेंट ज़रूर हो जाता है कि नहीं चाह करके भी हमें खर्चा करते रहना पड़ता है, तो वो पिछड़ने वाली स्टेटस हो जाती है। तो इसलिए मैं लोगों को ये थोड़ी-थोड़ी बातें आधा बताता हूँ कि हाँ, ये 10 लाख का से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी 12-13 लाख हो गया, तो ये ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत परेशान होने वाली है। लेकिन अगर 20-25 हो रहा है, तो वो डेफ़िनिटली आपको कहीं न कहीं से इम्पैक्ट करेगा। आपको ये सोचना थोड़ा भारी पड़ जाए, कैसे हम अरेंज करेंगे। हाँ, तो इसलिए इन पॉइंट पे हमें गौर करना चाहिए कि आप रिटर्न ऑफ कितने में आ रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को मैं बताता हूँ, जो भी हमें प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसके बाद बताता हूँ। और दूसरी जो आरओआई के बाद है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट में ये ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि इतना साल में, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो एक तो पहले आपको कस्टमर नहीं जानते हैं। दूसरा ये है कि जो कॉम्पिटिशन वाली पार्टी होते हैं, उससे मतलब एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में उतना नहीं होता। लेकिन जो उनके स्टाफ होते हैं, जो अप्रोच करने वाले लोग होते हैं, वो इतने डरे होते हैं कि फैसिलिटी इतना यूज़ नहीं कर पाते अपने कस्टमर तक पहुँचने के लिए। इवन भी बहुत सारी बातों में वो बात कहेंगे कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको लग जाता है कि यार मैं कैसे पूछूँगा वहाँ से? आपको पता है कि वो उन्होंने कैसे किया होगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला रूल आता है, रूल का मतलब ये है कि वो सारे सिस्टम की पूछताछ करते हैं। तो आप अपनी पीयर कंपनी से
ये पूछ सकते हैं कि आपने कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन आपके मन में खुद से डर लग जाता है कि यार मैं पूछूंगा वो कंपटीटर है मुझे क्यों बताएगा। तो ये जो चीज़ें होती है इस सब से निपटने के लिए ये आपको थोड़ी सी पहले अगर आप रिसर्च करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है बिजनेस स्टार्ट करने में। क्योंकि जो तो उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट का जो टाइम है वो आपको मतलब याद भी रखना है, मतलब बनाना भी है और उसके बाद उसको याद रखना है कि कितने साल में मुझे ब्रेक इवन मिलेगा। और वो अगर आइडिया रहता है तो आपका लक्ष्य थोड़ा क्लियर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा साफ रहता है। आप सोचते हैं कि यार इस इतने साल में होगा, इतना साल से हम पीछे चल रहे हैं, 3 साल सोचा था, 3 साल में नहीं आ रहा है। तो आपका जो रफ्तार है, आपका जो काम करने का स्टाइल है, वो अप्रोच है, वो चेंज होगा कि यार मुझे किसी तरह से ये जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, अपनी स्किल को सेल करना है, ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएँ। तो 2 बातें मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप ज़रूर कैलकुलेट करें और समझें भी। पहला है आरओआई, दूसरा है कि ब्रेक इवन पॉइंट। अब आरओआई और ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल में एक ही ये है, एक ही चीज़ है कि आरओआई आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे लेकर आता है और वो आपको बताता है कि इतने साल में आपके इनकम और प्रॉफिट मतलब सॉरी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आगे इसके इसके बाद जो होगा वो आपका अर्निंग होगा, वो आपको बिजनेस की प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। हाँ, और कोई बात पूछ सकते हैं, और भी पूछें, चेक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और आप चर्चे में रखेंगे तो आपको दिमाग में बिजनेस भी आएगा कि बिजनेस क्या क्या है। हाँ, खास करके यहाँ सोमालीलैंड में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड दिस वन, क्योंकि अभी आप देखें कि कई सारे जो है कंपनी हैं जो इंडिया से यहाँ आकर के चल रहे हैं और वर्किंग गुड। आई एम सेइंग दैट दे आर अर्निंग वेल, क्योंकि मैं जब कभी भी उन लोगों से बात करता हूँ तो वो लोग हमें कहते हैं कि इतना रेवेन्यू हो रहा है। प्रॉफिट नहीं शेयर करते मुझसे, लेकिन रेवेन्यू की बात ज़रूर करते हैं कि इतना रेवेन्यू उनको आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर। तो चलिए ठीक है, ये कैसा लगा ये मुझे आप मतलब इसमें कमेंट कीजिएगा ये कैसा लगा। इसमें मैं यही लोगों को कहता हूँ कि क्वेश्चन पूछें। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आइडिया आता है कि हम बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो अब अगली बार मैं ऐसे देखूंगा कि लो कॉस्ट बिजनेस क्या हो सकता है, और उस पर भी हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।